Today we will be starting with our new chapter, which is viscous flow. First of all, we'll understand what do we mean by viscous flow. If I talk about viscous flow, then we can say that when the movement of the fluid particles occurs along well-defined paths or streamlines, and those streamlines are straight and parallel to each other, that type of flow is known as laminar flow और viscous flow. मतलब जब भी जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी वेल डिफाइंड पाथ्स या तो हम स्ट्रीमलाइंस बोल सकते हैं उसके अलोंग उनकी मूवमेंट होती है, और जहाँ पे ये जो मेरी स्ट्रीम लाइंस है वो एक दूसरे को स्ट्रेट और पैरेलल होती है, ऐसे टाइप के फ़्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो या तो विस्कस फ्लो बोलते हैं. इट कैन बी आस्क्ड टू यू टू डिफाइन द लेमिनार फ्लो और विस्कस फ्लो. So you can say that laminar flow is the movement of the fluid particles along the streamlines where all the streamlines are straight and parallel. Let me just show you by diagram. But before we see the diagram, there is one more thing that you need to know is ये जो laminar flow होता है वो small diameter pipes में occur करता है, जहाँ पे जो fluid है मेरा वो लोअर वेलोसिटी पे फ़्लो होगा और उसकी विस्कोसिटी हाई होती है. अगर विस्कोसिटी हाई है तभी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली ग्लाइड कर पाएंगी, और तभी जो फ्लूइड पार्टिकल्स है दे विल बी एबल टू मूव ओवर लेयर्स, ग्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर्स. सो द लैमिनार फ्लो occurs in small diameter pipes where the fluid will flow at lower velocity and high viscosity. Now let me just show you the diagram. These are the streamlines. These streamlines are straight and parallel to each other, and the fluid particles will move along the streamlines like this, as I am showing in the diagram. In this manner, the fluid particles will move along the streamline, and the particles will move in layers, gliding smoothly over the adjacent layer. And the pipe diameter is small. Fluid will flow at low velocity and high viscosity. Now let's start with our first case, which is flow of viscous fluid through circular pipe. Here we are having incompressible viscous fluid flow through a circular pipe of radius r, as I have shown in the figure. And now we'll be considering a small concentric cylindrical fluid element like this, which is having radius of small r. The circular pipe is having the radius which we have denoted by capital R, and the small concentric cylindrical fluid element is having radius which we have denoted using small r. The length of this element is dx, and it is located at a distance of y from the boundary of the pipe. Like this distance is y. Let's see what all forces are acting on this small fluid element. Firstly, let me just apply the pressure. Here on this face, pressure will be P, and on this face, we'll consider variation of pressure with length, which is P plus del P by del X dx. Then on the cylindrical fluid element, shear stress will also be acting like this. So our first force will be the pressure force. Let me just denote the labels A, B, C, D. So it will be pressure force on face AB, which will be pressure is equal to force upon area. Therefore, force will be equal to pressure into area. So pressure into area for circle, which is pi r square. Then we have pressure force on the face CD. For CD, it will be P plus del P by del X dx into pi r square. Then the third force, which is shear force,
Now the shear force will be acting on the surface of the fluid element and it is opposing the motion. So shear force will be tau into 2 pi r into dx. Let's take the summation of all of these forces in the flow direction. This is my flow direction. When I'll take the summation in the flow direction, it will be p pi r square minus p plus del p by del x dx into pi r square minus tau 2 pi r dx, which is equal to 0. Now on expanding this, p pi r square minus p pi r square minus del p by del x dx into pi r square minus tau 2 pi r dx is equal to 0. So this will get cancelled, p pi r square, and we'll be left with dividing this by pi r square. So we have pi r square cancel, here also pi r cancel, we'll be left with minus del p by del x dx is equal to, taking this on right hand side, it will be 2 tau dx upon r. This dx will also get cancelled, so it will be tau is equal to r by 2 minus del p by del x. Now we'll be seeing the shear stress distribution diagram. First of all we'll derive tau max. यहाँ पे tau जो है वो r के रिस्पेक्ट में वेरी होगा, del p by del x will remain constant. और अभी हम लोग दो कंडीशंस देखेंगे. एक तो सेंटर ऑफ द पाइप पे, वहाँ पे मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और अगर मैं बाउंड्री की बात करती हूँ तो बाउंड्री पे मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R. जब हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं R इक्वल टू 0 तो मेरा टाउ हो जाएगा 0, और जब मैं R इक्वल टू कैपिटल R प्लेस करती हूँ तब मुझे टाउ मैक्स मिलेगा, विच इज़ माइनस del p by del x इंटू R by 2. तो ऐसा हो जाएगा मेरा shear stress distribution diagram, विच इज़ वेरिंग लीनियरली. सेंटर पे मेरा R हो गया 0 और बाउंड्रीज पे R इज़ इक्वल टू कैपिटल R. यहाँ पे हो जाएगा टाउ मैक्स और सेंटर पे टाउ कितना होगा, 0, और ये लीनियरली वेरी हो रहा है सेंटर से. नाउ वी विल गो फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. We already know as per Newton's law of viscosity, tau is equal to mu du by dy. और यहाँ पे डायग्राम में हमें एक और चीज़ दिख रही है, वो है कि ये जो है मेरा वो r है और ये जो टोटल है वो कैपिटल R है. इसका मतलब y will be equal to कैपिटल R minus small r. And when I'll differentiate y with respect to small r, what I'll get is dy will be equal to minus dr, because dy by dr is equal to minus 1, so dy will be equal to minus dr. We have already got the equation for tau and we have this another equation also. Here first of all let me just replace dy by dr, so it will be minus mu du by dr, and this minus mu du by dr is equal to minus del p by del x into R by 2. This minus minus will get cancelled and we'll have du by dr is equal to 1 upon mu del p by del x into R by 2. Then we'll integrate the equation with respect to R. When we'll integrate du by dr with respect to R, it will be equal to u. And when we integrate this 1 upon mu del p by del x R by 2, तो 1 upon mu del p by del x और ये 2 वो constant है, R का integration हो जाएगा R square by 2 plus C. And then we have boundary condition. R is equal to, जब R होता है मतलब मेरी boundary पे velocity हो जाती है 0. That's why we have u equal to 0 and we'll place R equal to R in this equation. So we get 0 is equal to 1 upon 4 mu del p by del x इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस C. इससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ माइनस 1 अपॉन 4 म्यू del p by del x इंटू R स्क्वायर. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे. सो u विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 म्यू del p by del x R स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 4 म्यू del p by del x इंटू R स्क्वायर.
Therefore, we get u equal to 1 upon 4 mu del p by del x minus del p by del x will take, और क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लिया है तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये जो u का इक्वेशन हमें मिला है उसमें डेल पी बाई डेल एक्स, म्यू और r ये सब कांस्टेंट रहेगा। u जो है, वेलोसिटी जो है मतलब हमारी, वो वेरी करेगी विद द स्क्वायर ऑफ r। अभी सेंटर ऑफ द पाइप पे, दैट इज़ जब r इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तब मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब r इज़ इक्वल टू कैपिटल R है, दैट इज़ बाउंड्री पे, वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। So here I am writing u max is equal to 1 upon 4 mu minus del p by del x into r square, क्योंकि मेरा जो स्मॉल r है वो ज़ीरो हो गया। ये जो डायग्राम है that is my velocity distribution diagram and the profile is parabolic. So this one is my shear stress distribution diagram and this one is the velocity distribution diagram. For shear stress distribution diagram, profile is linear, and for velocity distribution diagram, profile is parabolic. Now we'll find the ratio of maximum velocity to average velocity. उसके लिए पहले हमें average velocity का equation ढूंढना पड़ेगा, and in order to find the equation of average velocity हमें discharge का equation ढूंढना पड़ेगा। और discharge q ढूंढने के लिए हम लोग एक circular ring element consider कर रहे हैं of radius r and thickness dr. So first of all we'll find dq, which is velocity at radius r into area of the ring. वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे u से, एंड एरिया ऑफ द रिंग वो हो जाएगा 2 पाई r dr. वी हैव ऑलरेडी गॉट द इक्वेशन फॉर u विच इज़ माइनस 1 अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr. अभी ये जो dq है दैट इज़ फॉर अ सर्कुलर रिंग एलिमेंट, बट हमें चाहिए हमारी सर्कुलर पाइप के लिए, सो विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स from 0 to r. So it will be integration 0 to r dq and integration 0 to r 1 upon 4 mu minus del p by del x r square minus r square 2 pi r dr. लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा q इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे होगा, ये r के रिस्पेक्ट में करना है तो r हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब. सो इट विल बी 1 upon 4 mu 2 pi माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये सब जो है वो कांस्टेंट रहेगा. r का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर रेज टू 4 बाई 4. सो इट विल बी आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर रेज टू 4 बाई 4 फ्रॉम 0 टू r. Therefore we'll get pi upon 2 mu minus del p by del x r square by 2 माइनस r raised to 4 by 4. ज़ीरो प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़ीरो प्लेस करेंगे तो इट विल कम ज़ीरो ओनली. सो इट विल बी q इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट सी दिस, r raised to 4 by 2 माइनस r raised to 4 by 4 मतलब कितना हो जाएगा, r raised to 4 by 4 हो जाएगा. सो वी हैव pi अपॉन 2 mu माइनस डेल p by del x r raised to 4 by 4. And 4 2s are 8, so it will be pi by 8 mu minus del p by del x into r raised to 4. Now we can find the average velocity, which will be u average is equal to discharge upon area. We have already found q, और area circular pipe का हो जाएगा pi r square. So it will be pi by 8 mu minus del p by del x into r raised to 4 upon pi r square, which is r square will get cancelled, pi will get cancelled, and will be left with 1 upon 8 mu minus del p by del x into r square. We have to find the ratio of maximum velocity to average velocity. Now we are having both of the things. U max is 1 upon 4 mu minus del p by del x into r square, and u average is 1 upon 8 mu minus del p by del x into r square. So u max by u average is equal to 2.
This is very much important. 8 by 4 equal to 2, and you need to remember this, that u max by u average is equal to 2. Then we'll find the equation for pressure drop for a given length of pipe. Here we are having u average is equal to 1 upon 8 mu minus del p by del x into r square. So it will be minus del p by del x is equal to 8 mu u average upon r square. Therefore we can write that minus del p will be equal to 8 mu u average into del x upon r square. ये डायग्राम में जैसे हमें दिख रहा है, हमने एक लेंथ पाइप की कंसिडर की है जहाँ पे हम लोग प्रेशर ड्रॉप फाइंड करने वाले हैं. यहाँ पे सेक्शन 1 जो है x1 जितने डिस्टेंस पे है और सेक्शन 2 जो है वो x2 जितने डिस्टेंस पे है. तो विल इंटीग्रेट फ्रॉम 2 to 1. इंटीग्रेशन ऑफ del p is equal to 8 mu u average upon r square is constant. Integration 2 to 1 of dx. So this will be minus p1 minus p2. और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो होगा x1 माइनस x2. और जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि x2 माइनस x1 जो है दैट इज़ इक्वल टू l. लेफ्ट हैंड साइड पे वी आर हैविंग माइनस 1 इंटू पी वन माइनस p2. तो उससे माइनस 1 को हम डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे. सो दैट विल बी माइनस 8 mu u एवरेज r स्क्वायर. ये मैं लिख देती हूँ x2 माइनस x1. अगर मैं x2 माइनस x1 लिखती हूँ तो बाहर हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस. So it will be 8 mu u average upon r square into x2 minus x1 which is L. अभी हम लोग इसी इक्वेशन को r square की जगह डायमीटर के टर्म्स में लिखते हैं. तो 8 mu u average L r which is d by 2. So it will be d by 2 whole square which is d square by 4. 4 into 8 is 32. So it will be 32 mu u average L upon d square which is equal to p1 minus p2. अभी इसी इक्वेशन में से हम लोग एच एफ के लिए भी इक्वेशन ढूंढ लेते हैं. सो जस्ट डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय रॉ जी विल गेट दिस. वी ऑलरेडी नो p1 माइनस p2 बाय रॉ जी इज एच एफ विच इज़ इक्वल टू 32 म्यू यू एवरेज एल अपॉन रॉ जी डी स्क्वेयर. यू एवरेज को कई बार यू बार से भी डिनोट कर लेते हैं. दिस इक्वेशन दैट वी हैव गॉट दैट इज़ नोन एज Hagen-Poiseuille's formula. HF is equal to 32 mu u average L upon rho g d square. And one last important thing that I want to teach you is, it is asked to find the radius where the velocity is equal to the average velocity. मतलब जब मेरा u is equal to u average है तब रेडियस क्या हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट डू दैट. u इज़ इक्वल टू यू एवरेज. दोनों के इक्वेशन हमें पता है. माइनस 1 अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर बाय 2. माइनस 1 upon 4 mu del p by del x will get cancelled and will be left with r square minus r square is equal to r square by 2. So we have r square minus r square by 2 is equal to r square. R square minus r square by 2, that will be equal to 2r square minus r square whole divided by 2, which is r square by 2. Therefore we get r is equal to under root of r square by 2, which is r by root 2, which is equal to 0.707 r. So it's necessary to remember this, that when the velocity is equal to average velocity, r is equal to 0.707 r. This was our first case, flow of viscous fluid through circular pipe. The next cases we'll be seeing in the next video. Thank you.